तो सबसे पहले आई वांट टू डिस्कस द मास्टर क्वेश्चन विथ यू. Question 1, question 2 are not master question. Question number 3, oh sorry, question number 4 is a master question. It's a big question. It's a huge question. But the only reason why this question is so big is because it covers all the adjustments that we have discussed in lecture number 1. अब सारे एडजस्टमेंट्स को डिस्कस मतलब सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आगे चलते धीरे धीरे. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. Amos Limited is in the process of construction of its factory premises, which includes the building, shed, and storage facilities. The following costs were incurred for the construction of this new premises. You are required to advise which of the costs are to be capitalized as part of the cost of the new self-constructed asset, namely the factory. अब देखिए, एक पॉइंट को क्लियरिफाई कर दूं, ये इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला है. लेकिन आप ये एक क्वेश्चन अगर रिवाइज करोगे, देखिए इंटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कम पढ़ाई करने में ज्यादा आपका कवरेज होना चाहिए. तो आप 5 क्वेश्चन करो या एक ये क्वेश्चन करो, इट शुड गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन. इट्स एज गुड एज सेइंग कि कैन आई टेक 1 प्रोटीन पिल कि मैं 6 अंडे खाऊं. इट्स एज गुड एज सेइंग कि मैं एक प्रोटीन पिल ले लेता हूं. It's giving me equal amount of nutrition. That kind of thing we have to do, in inter. Now focus. Purchase of land for the purpose of setting up a factory building is 2 crores. सोच के बताइए, give me responses whether or not this is going to be capitalized. Purchase of land, yes or no? Capitalized? Yes. Next, stamp duty and registration. Paid off purchase of land, 6% of the land value. Again, this will be capitalized. Ab, welcome to a classic methodology of how ICAI asks you adjustments. आपको एक वैल्यू के बेसिस पे दूसरे वैल्यू का परसेंटेज दिया होगा. तो सपोज कीजिए आपने एक किसी की वैल्यू गलत ले ली, आपके आगे का पूरा कैलकुलेशन खत्म कर देता है इंस्टीट्यूट. दैट इज व्हाट दे डू. नेक्स्ट, लीगल फीस पेड टू इंस्पेक्ट द टाइटल डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स 25,000. कैपिटलाइज, यस और नो? Capitalize. Now, purchase of machinery to be installed in the factory premises, 25 crore rupees. The above is before considering a trade discount of 10%. मतलब ये 25 करोड़ में 2.5 करोड़ रुपए का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes or no? मिलेगा. Trade discount will always be deducted. Trade discount will always be deducted. The machinery, oh, yes, the machinery is subjected to a 5% import duty, which is non-refundable. My friends, non-refundable taxes will form a part of the cost of the PPE. लेकिन सवाल उठता है ये कि ये 5% import duty किस पे लगेगा? ये 25 करोड़ पे लगेगा या 25 करोड़ माइनस 2.5 करोड़ पे लगेगा? तो आंसर इज 25 करोड़ माइनस 2.5 करोड़ पे लगेगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट आपका आता है वो अमाउंट आपके इनवॉइस पे जाता है. समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए. आप कोई एक अमुक चीज खरीदिए, कोई भी एक अमुक चीज खरीदिए. ओ जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट 1 सेकंड. ऐसा थिकनेस क्या हो गया है? अब कोई भी एक अमुक चीज खरीदिए. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूं कि मैंने से लैपटॉप खरीदा जिसकी कीमत थी 50,000 रुपए, पर मुझे उस स्टोर ओनर ने डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो 5,000 का उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया. तो मेरे मशीन की कीमत कितनी हो गई? 45,000 हो गई. कितनी हो गई? 45,000 हो गई. अब इस 45,000 पर जीएसटी लगेगा. कीप दिस मच इन माइंड. जो फाइनल प्राइस होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस फाइनल प्राइस पे लगते हैं. Indirect taxes will not be levied on 50,000. Indirect taxes over here will be levied on 45,000. Be very, very careful about it. So what you need to understand in our case, what you need to understand in the case of my question over here is that this 25 crore minus 2 crore 50 lakhs, 2 crore 50 lakhs, sorry. So this will be 22 crore and 50 lakhs. On this value, you will charge import duty. On this value, you will charge the GST. Keep this much in mind.
It will not be charged on 25 crores. ये अभी से अपने माइंड में फैक्ट को फीड कर लो. Are there any doubts in this? Any doubts here? Any doubts here? Any doubts here? So basically, what do we have to do? We have to take the cost, subtract the trade discount, and then we go ahead. Now, suppose there is a cash discount or a settlement discount. Will that be considered in the price of the machine? The answer is no. Yesterday, we have seen that all settlement discounts, all cash discounts are going to be considered as other income. They will be not considered in the calculation. So, write on top of your page the first note. Write on top of your page the first note. I'm writing over here. Always remember that settlement discount will not impact PPE calculation, comma, it will be considered to be an other income item in P and L. The note is on the screen for you. This was seen yesterday in CA final study materials. But since I said that there is not much of difference between Ind AS 16 property, plant and equipment and AS 10 property, plant and equipment, I can very well, include these calculations over here. Now, the interesting part comes ahead. They are saying GST paid on capital cost of machinery is 12%. Okay. The capital cost of machinery is 22 crore and 50 lakhs. On this, you are paying a 12% GST. So 22 crore 50 lakhs multiplied by 12%. The answer comes to 2 crore and 70 lakhs. Am I right? Answer comes to 2 crore and 70 lakhs. Out of this, 50% can be claimed as an input tax credit. What is the meaning of that? That it is refundable from one place or the other. So 1 crore 35 lakhs will be capitalized, whereas the other 1 crore 35 lakhs, what will happen to that? It will be not capitalized. You can say not capitalized means expensed out. I don't deny. So then it will be adjusted in your GST calculations. This purposely we have taken in two different styles, so that first you understand this is non-refundable and second you understand refundable. Both the concepts I have covered over here in adjustments. Next, delivery charges of the machine up to the factory premises are 18 lakhs. Outright capitalization, it's a directly attributable cost. Now keep one thing in mind. When we make the presentation, we have to keep the space for writing the comments, right? So I'll come to that as I touch upon this. Anyway, going ahead. Installation fees have been paid to Messrs. Rao and Company, instrumentation engineers, for the installation and initial programming of the machine. They have raised an invoice of 6,50,000. Outright capitalization, directly attributable cost. The factory building will need construction materials and direct labor. Materials purchased are 60 crores. Out of this, 48 crores are applied for the construction of various infrastructures such as factory building, storage area, etc. In this, there was a negligence on the part of the construction supervisor that led to a loss of materials of 25 lakhs. How much materials will you capitalize? How much materials will you capitalize? 48 crores minus 25 lakhs, because 25 lakhs is an abnormal loss. So 48 minus this, so it will be 47 crore and 75 lakhs. Direct labor cost incurred through the period of construction, which is 1st October to 30th June. Here, I'm not interested in direct labor cost. See how institute will play with you. They will not give you the date of construction in the starting of the question. बीच में किधर तो date of construction आपको दे देगा to check your awareness. You will say why they did like this in CA Foundation. In CA Foundation, you are not expected to be this aware. In CA Inter, you are expected to be aware because your next step is articleship. So, अगर ये पकड़ने को नहीं आया तो ऑडिट कैसे पकड़ेगा? That is what institute will ask you indirectly. So keep your eyes open for institute questions at all times. I am purposely wasting so much time. I am actually investing time in this question. Why? क्वेश्चन पूरी तरीके से पढ़ना एक बेहद ज्यादा जरूरी स्किल है सीए इंटर को क्रैक करने के लिए. तो मेक श्योर कि हम लोग वो कर रहे हैं. अभी यहाँ पे यू गॉट अ क्लियर पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन. एंड व्हाट इज योर पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
January, February, March, April, May and June. It's a 9-month period for the construction of this asset. सर ये 9 months period for the construction of the asset आपने लगा दिया. ओके सर 9 months का कैलकुलेशन किधर किधर आ सकता है? दो जगह पे आ सकता है. व्हाट आर दोस दो जगह? सर फर्स्ट इज इंटरेस्ट एंड सर सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट एंड सर थर्ड एक फंटेस्टिक एग्जांपल आपको देता हूं. एक फंटेस्टिक एग्जांपल आपको देता हूं जो यहाँ पे कवर्ड नहीं है. सर सपोज करो ये फैक्ट्री बनाने के लिए एक जनरल प्लांट एंड मशीनरी यूज हुआ. क्या यूज हुआ? एक जनरल प्लांट एंड मशीनरी यूज हुआ. वो जनरल प्लांट एंड मशीनरी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, नॉट जस्ट दिस फैक्ट्री. बट वो इस फैक्ट्री के लिए 9 महीने यूज हुआ. तो उस जनरल प्लांट एंड मशीनरी के साल भर के डिप्रिसिएशन का 9 महीने का डिप्रिसिएशन यहाँ पे कॉस्ट के तौर पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. सो 3 खर्चे इसमें मैं दिखा दे रहा हूं कि क्यों डेट्स इंपॉर्टेंट है विथ एग्जांपल. सबसे पहला पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपना एम्प्लॉय कॉस्ट. सेकंड इंटरेस्ट, क्योंकि आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फिर कैसे करोगे. और तीसरा, अगर कभी भी एक जनरलाइज्ड एसेट एक स्पेसिफिक एसेट को बनाने में इस्तेमाल होता है तो उस जनरलाइज्ड एसेट का उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगना जरूरी है. द एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर. ओ सॉरी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इतने 9 months के लिए लग गया और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का कीमत है 2.5 करोड़ रुपए. अब ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ इसमें एडजस्टमेंट है, नॉट बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, बिकॉज डायरेक्ट लेबर है. हम लोग को पता है कि अब नॉर्मल अलाउड नहीं है, तो वो भी हम लोग मास्टर क्वेश्चन है कवर हो. एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर लेड टू अ लेबर स्ट्राइक and during this period fixed labor fees of 1,50,000 had to be paid. However, there was no work done during this time. This amount included the total sum is included in total sum paid for direct labor. मतलब ये 2.5 करोड़ के अंदर ये 1.5 लाख बैठा है, लेकिन ये 1.5 लाख का जब भी खर्चा हुआ तभी कोई काम आप कर नहीं पाए. मतलब ये 2.5 करोड़ के अंदर आपको 1.5 लाख हटाना है और सॉरी ये 2.5 करोड़ है, हाँ 2.5 करोड़ है. तो बेसिकली 2,48,50,000 ही आप कैपिटलाइज करोगे. 1,50,000 कहाँ पे जाएगा? 1,50,000 आपका चला जाएगा P&L में, एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है? वो एक अबनॉर्मल लॉस है आपके बिजनेस के लिए. व्हाट इज दैट फॉर योर बिजनेस? दैट्स एन अबनॉर्मल लॉस. इसको याद में रखना बेहद ज्यादा जरूरी है. अब आगे चलो. एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट ये हो गया. RSVA and associates were hired as architects for overseeing the construction of the factory. They have raised a bill of 75 lakhs. Capitalized. Actually, RSVA and Associates is a very good CA firm in Thane. In Thane, I know one of the partners there is a very positive presence in my life. So I was just thinking when I was drafting the question, मैं बोला चलो शेखर साहब का नाम डाल देते हैं क्वेश्चन के अंदर. तो 75 lakhs dedicated to CA Shekhar Kulkarni. चलो आगे. The cost of relocating the staff and other necessary equipment from the old factory to the new one is 15 lakhs. Keep one thing in mind, cost of relocation, will it be a directly attributable cost? Specifically mentioned in AS10, cost of relocation cannot be a directly attributable cost. आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते. ये 15 लाख पूरा का पूरा निकल के P&L में जाके बैठ जाएगा. Be very very careful about that. Next, there was a grand opening at the hands of the local MLA and the whole ceremony and program resulted in a cost of 5,50,000. Grand opening, cost of inauguration not to be included. Finish off. Administrative overheads is specifically incurred. What is the word? Specifically incurred. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल नेचर के हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल नेचर के हैं, if they are of a general nature, if they are of a general nature, then they will not be included in the cost. But if they are of a specific nature, if they are of a specific nature, they will be included. Now they are of a specific nature, they will be included. The construction of this factory has taken a total of 9 months. वापस दोहराया है. Actually, ये मेरी ड्राफ्टिंग में मैंने लीनियंसी बरती है. ये यहाँ पे लिखा नहीं जाना चाहिए. ये मिस्टेक हो गया है. ये मिस्टेक हो गया. क्यों? ये लीनियंसी है. ये स्टूडेंट को क्लू दे देता है. क्यों? स्टूडेंट शुड स्टार्ट थिंकिंग, अरे कितने मंथ्स के लिए मैं इसकी सैलरी को लूं, तो तभी उसको ना ये पॉइंट
ढूंढना उसको जरूरी पड़ जाना चाहिए फॉर द स्टूडेंट। काइंडली कीप दैट मच इन माइंड। एनीवे, अब ये मिस्टेक हो गया मेरे से, बट काइंडली कीप दिस मच इन माइंड। ये मैंने लीनियंसी बरती है, ये मिस्टेक है। एग्जाम में ये ऐसा शायद ही ना दे आप। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री has taken a total of 9 months during which the following employees are involved in its production. Senior manager, monthly salary 3.5 लाख, he has dedicated 80% of time. So 3,50,000 का 80% is used for 9 months. तो कितना हो गया ये? 25,20,000। सुपरवाइजर का 2,25,000 पूरा का पूरा 9 मंथ्स के लिए यूज होगा, तो ये 20,25,000 हो गया। ठीक है जी। 1 लाख रुपए ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, 50% मतलब 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 विच इज 4.5 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 49,95,000 ऑफ सैलरी इन्होंने इसके लिए एलोकेट किया है। अ लोन वाज अवेल्ड फ्रॉम आईडीबीआई बैंक फॉर द फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन। इट वाज टेकन फॉर 15 करोड़। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% per annum. That's it. Please understand. For how many months we are talking? 9 months. तो 15 करोड़ के ऊपर 12% 9 महीनों के लिए आपका क्या कॉस्ट आता है? इज इट 1,35,00,000 ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट? यस, दैट विल बी कैपिटलाइज्ड। The factory construction was completed on 30th of June. However, for strategic and operational reasons, it was put to use on 15th of September. मैंने CA फाउंडेशन करते हुए एपेक्स पे सिखाया था। When the asset is ready for its intended use, from that period onwards, the depreciation starts. ये hidden adjustment है just to check your presence of mind and discuss in the class. When will you start the depreciation? 1st July onwards, 100%. July, August or आधा September. It is a management decision why you have not used your factory. But if it is ready for its intended use, you have to start giving the depreciation. This is an outright rule of AS10. The factory is constructed near a forest zone and the construction has resulted in damages to the environment. Hence, after a period of 15 years, be careful with the drafting of the question. After a period of 15 years, the company is expected to augment the region, which will cost 1,25,00,000. Augment means नए पौधे लगाएंगे, जो भी रिपेयर करेंगे, 1,25,00,000 एज पर फ्यूचर एक्सपेक्ट्स, मतलब फ्यूचर वैल्यू 1,25,00,000। बट ये डीकमिशनिंग लायबिलिटी का पॉइंट है, ये आप समझ चुके। डीकमिशनिंग लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे लिखा जाता है या फ्यूचर वैल्यू पे लिखा जाता है? आंसर इज फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। आंसर इज प्रेजेंट वैल्यू पे लिखा जाता है। उधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया गया है 15 years, मतलब हाउ टू टेक ऑन कैलकुलेटर? 1 divided by 1.14, 15 times equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Is it 0.14009648,204 multiplied by 1,25,00,000? Your answer is how much? 17,51,206. That is the present value. That will be capital. आगे कोई और एडजस्टमेंट दिया है क्या? ओ, टेस्ट रन, हम लोग टेस्ट रन भूल गए थे। अभी तक सारे नहीं टच हुए। टेस्ट रन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। टेस्ट रन फॉर द cost of test run is 3,50,00,000. The samples are sold to various vendors for 2,75,00,000. What amount will be capitalized? Test run 350 minus 275, 75 lakhs over here will be capitalized. With this, our master question on capitalization cost comes to an end. इसमें दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सेटलमेंट डिस्काउंट कंसिडर नहीं होगा कभी भी, और दूसरा, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आर नेवर एवर कैपिटलाइज्ड। एक दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूं, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूं। इधर हेडिंग दीजिए इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं? This pertains to the losses that are incurred during or due to initial operating activity after PPE is ready. यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? आफ्टर पीपीई इज रेडी। Hence,
These are never capitalized. Why they are never capitalized? अरे अभी तो एसेट आपका तैयार हो गया ना, तो अभी लॉस हो गया, वो तुम्हारा लुकआउट है, वो तुम्हारा स्ट्रेटेजी है, वो तुम्हारा बिजनेस एक्यूमेन है, वो तुम्हारा एफिशिएंसी है, पीपी रेडी हो गया, हाँ, तो उसके बाद लॉस हुआ, इज आर नेवर कैपिटलाइज्ड. इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, इसको ऐसा सर्कल करो, एरो मार के लिखो, ऑलवेज एक्सपेंस्ड आउट टू स्टेटमेंट ऑफ पीरियड. They are always expensed out to statement of period. Kindly keep that much in mind. Copy down this. Copy down this, guys. Yeah. Okay. Okay. So let us continue now from this particular point. अभी यहाँ से अभी तक डिस्कस हो गया है. Now we have to start writing in our notebooks how the thing has to be done. Now pay attention over here. इसका राइटिंग का एक स्टाइल मैं आपको दिखाता हूँ. Pay attention here. See here you have to be careful. इसमें अपने को क्या करना है, देखो. So first you will make a column called serial number. इसके बाद आप कर देना पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स के आगे आप लिख देना अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड. और इसके आगे आप दे देंगे रीजन. रीजनिंग ऐसा कॉलम आप करो. इसमें क्या होगा, आपके सारे जो देखा जाए आइटम्स कवर होंगे और उसकी रीजनिंग आपको उधर की उधर उसकी मिल जाएगी. ओके. सीरियल नंबर वन. सीरियल नंबर वन क्या है, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी. सीरियल नंबर वन इज परचेज प्राइस ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग. तो यहाँ पे सीरियल नंबर वन क्या आएगा, परचेज प्राइस ऑफ लैंड. अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड विल बी द फुल सम ऑफ 25 crore. Reasoning, it is part of the purchase price of the asset. It is purchase price of asset. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो टू बी कैपिटलाइज्ड. आइडियली ये टू बी कैपिटलाइज्ड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं. आप यहाँ पे लिख सकते हो परचेस प्राइस ऑफ एसेट. आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, परचेस प्राइस ऑफ एसेट भी लिख दोगे तो भी चलेगा. सेकंड. सेकंड क्या है, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन. ये जो पॉइंट नंबर वन है उसका 6% है बोलता है. तो 25 करोड़ का 6%, आई थिंक इट शुड बी 1 crore 50 lakhs. इट इज 1 crore 50 lakhs. Again, stamp duty and registration can be considered to be part of purchase price of asset.
कोई बोल सकता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, मैं मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ कि इट इज पार्ट ऑफ परचेस प्राइस, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन साथ में आप वहां पे भरते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. लीगल डीड्स पेड टू इंस्पेक्ट द टाइटल डीड्स, सो यहाँ पे लीगल फीस फॉर टाइटल डीड ऑफ लैंड, legal fees for title deed of land. How much are your legal fees you have paid? 25,000. Abhi 25,000, it is a directly attributable cost. It is a directly attributable cost. Just a second, guys. Legal fees, directly attributable cost. Fourth point. What is the fourth point? Purchase of machinery to be installed in factory premises 25 crore above is before considering a trade discount. Okay. Purchase price of machinery after trade discount. How much? 25 crores is the cost of the machinery. From this, I have subtracted 10%. So 25 crores minus 10%. What is the answer? 22 crores and 50 lakhs. What I will write over here? Purchase price of asset. What is this? Purchase price of asset. Fifth one. Fifth one is machinery is subjected to 5% import duty, which is non-refundable. Okay. Import duty into bracket non-refundable. Reasoning purchase price of asset. Reasoning purchase price of asset. It is paid on 22 crore 50 lakhs. And how much amount you have paid? 5%. So 22 crore 50 lakhs multiplied by 5%. It is 1 crore 12 lakh and 50,000. 1 crore 12 lakh and 50,000. Sixth. What is the sixth one? GST paid on the capital cost of machinery at the rate of 12%. 50% of this amount can be claimed as an input tax credit of the capital goods. Here I am taking GST, non-refundable. Now, on 22 crore 50 lakhs, what is the amount of GST? 12%. So 22 crore 50 lakhs, amount is 12%. How much is it? 2 crore 70 lakh. Out of this, 50% is non-refundable. So 1 crore 35 lakhs. What is this? Purchase price of asset. Let's go for the seventh. What is the seventh item? GST done. Delivery charges up to factory premises, 18 lakhs. How much? 18 lakhs. What is the amount? 18 lakhs, sorry, it is what? Directly attributable cost. Installation fees paid by Rao and Company. Again, installation fees. 6 lakh and 50,000. Again, what is this? Directly attributable cost. Next. Factory building will need construction, material and labor. Direct material 48 crores, उसमें से 25 लाख is wasted. Direct material applied 48 crores था, उसमें से 25 lakhs is what? Abnormal loss.
How much will this become? 47 crore 75 lakhs. करेक्ट. यहाँ पे रीजनिंग में लिखो abnormal losses will not be capitalized. Next, direct material हो गया. Sorry, the next is direct labor, I believe. Next is direct labor. Direct labor is how much? 2 crore 50 lakhs. But in this 2 crore 50 lakhs, 1,50,000 is for labor strike. So how much will this be? 2 crore 48 lakh 50,000. Again, right over here. Abnormal losses will not be capitalized. Number 11. Action taken by management against the construction supervisor. ये हो गया, ये 150 हो गया. RSV and associates architects. So again, architect fees. अभी यहाँ पे आपने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो लिखा ना लीगल फीस, इसके आगे ब्रेस ब्रैकेट मार के लिखे प्रोफेशनल फीस. सर आपने ऐसा क्यों लिखा? आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में आप देख लीजिएगा, जो प्रोफेशनल फीस है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में लिखा जाता है. तो हम लोग यहाँ पे आर्किटेक्ट फीस तो लिख देंगे उनका पूरा. आई थिंक आंसर इज 75 लैक्स. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोफेशनल फीस इनटू ब्रैकेट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. अभी 12, अभी 12. द कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग द स्टाफ. इधर लिखिए कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग. इधर आएगा नॉट एप्लीकेबल. क्यों? यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन is not to be capitalized. Is not to be capitalized. Number 13 क्या बोलता है? ग्रैंड ओपनिंग इनॉग्यूरेशन एक्सपेंसेस. इधर भी आएगा नॉट एप्लीकेबल. इसका रीजन इनॉग्यूरेशन एक्सपेंसेस not to be capitalized. Number 14 कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री has taken a total period of 9 months. यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट्स. क्या आएगा यहाँ पे? एम्प्लॉय बेनिफिट्स. एम्प्लॉय बेनिफिट्स सबसे पहले क्या आएगा? सीनियर मैनेजर. आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना आपके नोटबुक में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेस कम है. सीनियर मैनेजर 3,50,000 per month. Of course 80% of that is being used for a period of 9 months. Second is supervisor 2,25,000 पूरा सैलरी उसका लग रहा है for 9 months. Then comes assistant manager, which is 1 lakhs. इसका आधा सैलरी लग रहा है 9 months. What is the answer? 3,50,000 multiplied by 80% multiplied by 9. ये 25 हो गया. 2,25,000 multiplied by 100% multiplied by 9. Next 1 lakh multiplied by 50% multiplied by 9. So the total comes to 49,95,000. ठीक है. और यहाँ पे लिखिए एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट स्पेसिफिकली इनकर्ड for the self constructed asset
are directly attributable costs. What are they? They are directly attributable costs. Next, number 15. A loan was availed from IDBI Bank. Borrowing cost. Borrowing cost to be capitalized as per AS 16. कितना है आपका लोन बॉस? 15 करोड़ का लोन है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है? 12% लगा है. और आपको 9 महीने लगे हैं ये एसेट को कंस्ट्रक्शन करने में. It's taken you 9 months to finish off the asset. So what will it be? 15 crores multiplied by 12% multiplied by 9 divided by 12. So it is 1 crore and 35 lakhs. 1 crore and 35 lakhs. एक बार प्लीज आप चेक करना. 1 crore 35 lakhs on calculator. Quickly check it. Right? Okay. What is this? Interest cost on qualifying asset is to be capitalized up to period of completion as a part of cost of PPE as per AS 16. I'm so sorry. Yeah, as per AS 16. Correct. As per AS 16. Kindly keep that much in mind. Interest cost on qualifying asset is to be capitalized as a part of cost of this as per AS 16. Number 16. 1 crore 25 lakhs is the future value. Decommissioning liability at present value लिखना है. So of course multiplied by present value interest factor 14% for how many years? For the 15th year. So it is nothing but 1 divided by 1.14. 1 divided by 1.14. Right? For 14 years. Now it's 1 crore 25 lakhs. So now 1 divided by 1.14 is equal to how many times? 15 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 multiplied by 1 crore 25 lakhs. What do you get? 17 lakhs 51,206. What is this? Here, present value of decommissioning liability to be capitalized as a part of cost of PPE, as a part of cost of PPE. Very, very important. Number 17, cost of testing. Cost of testing कितना था? 3.5 करोड़ का कॉस्ट था टेस्टिंग का. 2 crore 25 lakh rupees was the revenue from sales of the samples. 75 lakhs क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज. यहाँ पे नोट क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेस सेल प्रोसीड्स. स्टैंडर्ड में या आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में व्हाट इज द वर्ड यूज्ड? सेल्स प्रोसीड्स. कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेस सेल्स प्रोसीड्स. तो यहाँ पे सेल प्रोसीड ऐसा लिखेंगे. आर टू बी टेकन as directly attributable cost and hence they are capitalized. चलिए सारे नोट्स ज्यादातर हमारे बना के हो गए. ज्यादातर मतलब क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं. नाउ इट इज कंप्लीट. अभी अपने को टोटल्स लेने हैं. कैपिटलाइजेशन 25 लाख, 1 करोड़ 50 लाख. सो चलिए 25 करोड़, सॉरी 25 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, फिर 25,000, फिर 22 करोड़ 50 लाख, फिर 1 करोड़ 12 लाख 50 हजार, फिर 1 करोड़ 35 लाख, फिर 18 लाख,
फिर 6,50,000, फिर 47 करोड़ 75 लाख, फिर 2 करोड़ 48 लाख 50,000, फिर 75 lakhs, फिर 49,95,000, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट 1 करोड़ 35 लाख, फिर 17,51,206, उसके आगे फाइनल 75 lakhs। तो ये टोटल 105 करोड़ 48 लाख 21,206 का आपका प्लांट एंड मशीनरी बन गया, फैक्ट्री बन गया। 105 करोड़ 48 लाख 21,206, ये बिलीवेबल नंबर है। इंस्टीट्यूट फैक्ट्रिया अपने बुक्स में 5,000 50,000 60,000 की बनाती है। दिस इज अ वेरी बिलीवेबल नंबर। दिस इज कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री टू बी कैपिटलाइज्ड, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री टू बी कैपिटलाइज्ड। Master question on PPE with respect to directly attributable cost and cost to be capitalized is over. इसके आप सॉल्यूशन में भी देना, इधर मास्टर सम ऐसा आपने लिखना। कल के लेक्चर में मैंने आपको बोला था, लास्ट टाइम के लेक्चर में, that we'll be doing a master question. So copy down everybody. I'm waiting, not to worry. This is a master sum. Copy down peacefully. This master question will play an important role in your revision of all the concepts. अब देखना, अब देखना, मैं आपके साथ और 4 से लेके 5 क्वेश्चंस करूंगा अभी के सेशन में। अभी के सेशन में मैं और 4 से लेके 5 क्वेश्चंस आपके साथ करूंगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 4 से लेके 5 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आप सॉल्व कर पाएंगे। वेट एंड वॉच वो कैसे होते हैं। अजम्पशन इस सबका लिख के हो गया साथ साथ कि किसका बाकी है? बाकी है, चलो लिखो लिखो। ओके गाइस, रिटन सबका हो गया। चलो, नाउ एक्चुअली एग्जाम क्वेश्चंस कैसे आएंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी देयर वैरायटी, उसको देखते हैं। मास्टर क्वेश्चन इज ओवर,
चलिए, लेट्स टेक अ लुक एट अ जनरल एग्जाम क्वेश्चन विच आई बिलीव ये 5 मार्क्स की वेटेज इसमें होती है. Question number one, Z Limited is installing a new plant at its production faculty. It is facility. It has incurred the following cost. Cost of the plant. Capitalize yes or no? Capitalize. Initial delivery. Capitalize yes or no? Capitalize. Cost of site preparation. Capitalize yes or no? Capitalize. Consultants advice used for the acquisition of plant. Capitalize yes or no? Capitalize. Interest charges paid to the supplier of the plant for deferred credit will not be capitalized. Sir, ये होता क्या है? हमें बताइए. Now is a very, 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 very important concept. I want you to pay keen attention to what is being discussed now. देखिए, सबसे पहले एक बात समझिएगा. इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट ये कभी कैपिटलाइज होता है. इंटरेस्ट इफ, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नहीं लिखते, पहले लिखते हैं कि अगर आपका सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट या फिर सॉरी एसेट ही लिख देता हूं. अंडरस्टैंड? एसेट if it takes a substantial period of time to be ready for its intended use, then the asset is equal to a qualifying asset. और क्वालिफाइंग एसेट को बनाने का लोन जो होता है, क्वालिफाइड एसेट को बनाने के लिए इफ यू हैव टेकन लोन, इसको बनाने का लोन का इंटरेस्ट, इसके बनाने के लोन का इंटरेस्ट अप टू पीरियड ऑफ asset getting ready for intended use is capitalized as per AS 16. For example, construction of asset starts on 1st of April 2010. Completion of construction happens on 1st of March 2012. Please notice over here, period of construction क्या है? It is 1st of April 2010 to 1st of March 2012. So 1st of April 2010 to 31st of March 2011. ये कितना हो गया? 1 year. 1st of March 2011, 1st of April sorry to 31st of March 2012. ये कितना हो गया? 11 months. कितना हो गया? 11 months. सपोज करो लोन है 15 करोड़ का, इंटरेस्ट है 10%, 12%. इंटरेस्ट कितना है? 12%. तो पहले ईयर में कितना कैपिटलाइज होगा? 15 करोड़ के ऊपर सीधा 12%. और दूसरे ईयर में कितना कैपिटलाइज होगा? 15 करोड़ के ऊपर का 12% फॉर 11 मंथ्स. फॉर 11 मंथ्स. ये 11 मंथ समझना जरूरी है. वो एक महीना क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी एसेट रेडी हो गया. ये जो ब्याज लगा ये कितना आएगा? 15 करोड़ का 12%, 1,80,00,000. और 1,80,00,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये आएगा 1,65,00,000. दूसरा कितना है? 1,65,00,000. एक बार चेक कीजिए प्लीज जल्दी. 1,65,00,000 और 1,80,00,000 कितना हो गया? 3,45,00,000. बराबर है भाई?
ये क्या है? दिस इज इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। पर ये कैपिटलाइज क्यों हुआ? ये कैपिटलाइज हुआ क्योंकि एसेट को रेडी होने में सब्सटेंशियल पीरियड लगा। सबसे पहला पॉइंट और कॉन्सेप्ट ये है। सबसे पहला पॉइंट और कॉन्सेप्ट ये है। प्लीज इसे कॉपी डाउन कीजिए। आपके नोट का हेडिंग दीजिए डिफर्ड क्रेडिट। आपके नोट का हेडिंग दीजिए डिफर्ड क्रेडिट। ये आपके नोट का पार्ट 1 है। आपके नोट का हेडिंग दीजिए डिफर्ड क्रेडिट। आपके नोट का हेडिंग दीजिए डिफर्ड क्रेडिट। इंपॉर्टेंट नोट है। इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है गाइस, डन। इरेज कर रहा हूं। अब देखिए डिफर्ड क्रेडिट का मतलब क्या। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ना, डिफर्ड क्रेडिट का मतलब क्या। डिफर्ड क्रेडिट फ्रॉम वेंडर। अब समझने की कोशिश करो। एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, but you don't have money to pay to the vendor. So what do? You request for credit. You request for credit. What is credit? Udhar. You request for credit udhar. So vendor gives you udhar. Vendor allows this but charges interest on the same. But charges interest on the same. What happens because of that? Please understand. Since the asset is ready for its intended use, here no interest cost is allowed to be capitalized as per AS 16. Therefore, interest paid to vendor for deferred credit terms
is not capitalized as a part of the cost of the asset. This is important. सर ये आपने इतना डिटेल सी दिस डिटेल्ड नोट इज फॉर राइट नाउ आप सीख रहे हो फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आपको अगर ये डेफर्ड क्रेडिट का पॉइंट क्वेश्चन में आता है आपको पता है कि वो उसको अपने को लेने का नहीं है, वो अपने को लेने का नहीं है. बट यू शुड हैव दैट जस्टिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ यू, शुड हैव दैट जस्टिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ यू so that you are able to probably, you know, easily knock it off when that comes in your exams for you. Right? Okay. वेंडर को इंटरेस्ट मिलेगा वो उसका इंटरेस्ट इनकम हो गया. अपन जो इंटरेस्ट दे रहे हैं अपना एक्सपेंस हो गया. इट्स अ फाइनेंस कॉस्ट, वो पीएनएल में अपन एक्सपेंस कर देते. ये कैपिटलाइज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि एसेट ऑलरेडी तैयार है. देखिए मुझे आपसे लैपटॉप खरीदना है. लैपटॉप सपोज कीजिए मुझे ये एप्पल वाला खरीदना है, ये वाला खरीदना है. ये 3 लाख का लैपटॉप है. ठीक है. अब मेरे पास 3 लाख रुपए आपको देने के लिए है. मैं 25,000 रुपए आपको दिया. मैंने बोला बाकी का मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा. आपने बोला ठीक है इंस्टॉलमेंट में दे, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे देगा तो इंटरेस्ट लगेगा. तो मैंने आपको इंटरेस्ट पे किया. वो इंटरेस्ट जो मैंने आपको पे किया, एसेट तो रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज है. जब भी मैं आपके शोरूम से बाहर निकला तभी एसेट वाज रेडी टू यूज. लेकिन इफ द एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, एनी ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट दैट इज बीइंग इनकर्ड इज नॉट बीइंग इनकर्ड फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट. मतलब when asset is ready for its intended use already, it does not take a substantial period of time to get ready. Asset is not a qualifying asset. क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर का ही इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं, बाकी इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर सकते. बराबर है? ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन अभी इजी बन गया. इंटरेस्ट चार्जेस पेड, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा. तो यहाँ पे है कैपिटलाइज, यहाँ पे है कैपिटलाइज, 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 नो कैपिटलाइजेशन. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड, इधर सीधा दिया है प्रेजेंट वैल्यू, कैपिटलाइज. ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन नॉट टू बी कैपिटलाइज. अभी ऑपरेटिंग लॉसेस के ऊपर का शायद मैंने अभी नोट थोड़ी देर पहले लिखाया था. ऑपरेटिंग लॉसेस नोट लिखाया था, तो अपने पास इसका भी नोट है. तो इसको ना, एक सेकेंड ना, इसको यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए. जस्ट फोकस, जस्ट 1 सेकेंड, जरा सा टाइम देना. ये अमाउंट है, अमाउंट आ गया ना. तो कैसे लिखेगा पता है? ये रीजनिंग लिखता हूं मैं इधर, और इधर लिखता हूं अमाउंट टू बी कैपिटल. ऐसे करो. ये 25 करोड़ कॉस्ट. रीजनिंग, इट इज पार्ट ऑफ परचेज प्राइस. अमाउंट टू बी कैपिटलाइज ये 25 लाख. आगे इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो इधर आएगा 2 लाख. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इधर आएगा 6 लाख. नेक्स्ट कंसल्टेंट्स एडवाइस, अगेन इट इज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इधर आएगा 7 lakhs. इंटरेस्ट चार्जेस, रेफर नोट. तो नोट में यहाँ पे लिखा रहा हूं आपको. नोट, it is assumed that asset in question is not a qualifying asset, and hence interest charges for deferred credit cannot be part of
amount to be capitalized. Next, present value of this here, decommissioning liability reasoning. Decommissioning liability is capitalized at present value. इधर लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ decommissioning liability, तो इधर आएगा 3 लाख. ऑपरेटिंग लॉसेस, रेफर नोट, ये आपका रेफर नोट 1 आएगा, ये इधर आपका नोट 2 आएगा, तो नोट 2 लिखता हूँ. Operating losses are not capitalized as asset is ready for intended use. बस. तो रेफर नोट 1 इधर नील है आपका, इधर भी आपका नील है, तो क्या आएगा? 25 लाख, 27 लाख, 33 लाख, 40 लाख. इट इज 43 lakhs. लेट्स चेक अगेन वंस वो लिखने में. 25 lakhs, 27 lakhs, 33 lakhs, 40 lakhs, not to be taken, 43, not to be taken. What is this? 43 lakhs. What is this? Cost to be capitalized as per AS 10. As per AS 10. So this was your question number 1 का solution.
Done, guys? Done? Okay. Let's go to the next question. Done? Written? Clear? Everything is written? All the notes are written? You want to see anything you missed out? Question number two. Oh, this is a good question. This is a good question. Actually, you can treat this as the master question, but इसमें दो तीन adjustment नहीं है. Let us see. Purchase of land 10,000 10,000 मतलब कितना होता है? मेरे ख्याल से 1 करोड़ हो गया. 10,000 multiplied by 1,000. Yes, it's 1 crore. Cost of dismantling existing structure on the site. This is a site clearance fee. It is a site clearance cost. It will be capitalized. It is a directly attributable cost. Be very careful about this. This is a directly attributable cost. Purchase of materials to construct the factory, capitalized. Employment cost depends. Production overheads directly related to the construction, they are going to be capitalized. Allocated, my friends, what is the word allocated? Matlab they are specifically incurred. They are allocated. They are not general. They are allocated. General admin ho sakte hai, but they are allocated to this. Architects and consultants fees directly related capitalized. Cost of relocating no capitalized. Cost related to formal opening no capitalized. Interest on loan to partially finance the factory construction will be capitalized if it's a qualifying asset. Plant and machinery purchased for use in factory 6,000 will be capitalized. Next point. तर मशीनरी का स्पेलिंग शायद रॉन्ग हुआ है क्या? नहीं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन. फैक्ट्री took 8 months to complete and was brought into use on 30th of June. The employment costs are for 9 months. तो ये 9 months के कॉस्ट है, आपको इसको 8 months के लिए देना पड़ेगा. प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर इनकर्ड इन 8 months ended 31st of May 2012. They included an abnormal cost of 2 lakhs. Okay. प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 1200. इसमें 2 लाख. 1200 मतलब एक्चुअली वो 1200 into 1000 मतलब 12 लाख है. उसमें 2 लाख का एबनॉर्मल लॉस है, तो 10 लाख ही इसमें कैपिटलाइज होगा. नेक्स्ट, एक्स रिसीव्ड अ टोटल लोन ऑफ 120 लाख मतलब 1 करोड़ 20 लाख. 1 करोड़ 20 लाख. इसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट आपका कितना है? 10% है, तो इंटू 10% करो. आगे क्या बोलता है? 1 अक्टूबर को लिया है. प्लांट तुम्हारा कंप्लीट कभी हुआ है? इट वॉज कंप्लीट एंड ब्रॉट इन टू यूज on it was complete and was brought into 30th. तो अभी देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर incurred 8 months ended 31st of May. Now please understand what is the date of completion. Date of completion of plant is very very important. Just a second, इधर शायद मेरे end से there has been a slight printing error, a typing mistake. Let me just check in institute literature what is the date of completion, because just a second, date of completion, it took 8 months to construct. So yes, not a printing mistake. Now please understand, it took 8 months to complete. So 1st of October 2011 से आगे 8 months गिनो. October, November, December, January, February, March, April and May. So it is completed when? Now please understand this. Now you can start over here. You can start your solution, or wait a second. Solution ना अपन इसका इधर लिखते, इधर इसका सॉल्यूशन बनाते. सो लेट अस फर्स्ट मेक सम बेसिक वर्किंग नोट्स. व्हाट इज द स्टार्ट डेट? 1st of October 2011. What is the completion date? 31st of May 2012. How many months this is? This is 8 months. How many months this is? 8 months. So interest and employment cost will be capitalized for period of 8 months. Now let's go into the question. Purchase of land. So look, let's put one by one. First is what? Purchase of land. What is purchase of land? It is price of asset. It is purchase price of asset. What is the word we are using so far? We are using word purchase price of asset. What is the amount? 10,000 lakhs. मतलब it is 1 crore. मैं सीधा इधर 1 crore लिख रहा हूँ. Next. What is next? Cost of dismantling the structure on the site. Can I write site clearance cost? Site clearance cost is what?
It is a directly attributable cost. How much is that? 500,000. Next, purchase of materials to construct the factory. Materials. Now, my dear friends, for materials, is there any abnormal loss? No, none of the abnormal loss is given. It is straight away 600,000. Purchase of materials, you can see it is a directly attributable cost. I will write over here 6 lakhs. Next, what are they saying? 6 year 166. It is 6 lakhs, 600. Oh, it is 6,000. Sorry, it will be 60 lakhs. It will be 60 lakhs. I'm so sorry. It will be 60 lakhs. Yes. Materials done. Next is employee benefits. What are that? Employment cost 1800. Now, इसमें adjustment है. Now, please pay attention. Employee benefits or employee cost. See, first of all, understand that employee cost are a directly attributable cost. But they are directly attributable for the period in question. Now, see, please understand. 1800 has been incurred for 9 months, but you are supposed to take it for 8 months. So, what will be your answer over here? Your answer over here will be 1600,000. So, it should be how much? 1600,000. 16 lakh आएगा, 18 lakhs नहीं आएगा. Why? Because you are taking it for 8 months. So, employee cost has been taken care of. Employee cost के आगे चलते हैं. Employee cost के बाद है production overhead directly related to the construction. But इसमें abnormal loss है. Production overheads directly related. Please remember in the reasoning what I'm writing, see, focus on the reasoning part. It is a directly attributable cost. However, abnormal loss will not be included. What will not be included? Abnormal loss will not be included. What is the amount? Amount is 1200 और उसमें 2 लाख नहीं है, तो इधर कितना आएगा? Correct? It will be 10 lakhs. So production overheads are taken care of. Next item on the list. Allocated general overhead 600,000. Allocated है तो पूरा का पूरा आ जाएगा. See, they are allocated. So allocated है, they have to come. Kindly understand this. Just a second, guys. एक मिनट. Just a moment. I have made a mistake. Please understand. This is allocated. Allocated general admin. Please understand. Not allowed. Now please understand why. मैंने अभी बोला था लेंगे. See, please understand. Allocated का मतलब क्या होता है? Allocated means not specifically incurred. Allocated means not specifically incurred, but they are apportioned. Apportioned मतलब बंटवारा करके तुम्हारे हिस्से में डाल दिए. Apportioned to this asset. Full stop. It will be capitalized only if it is specifically incurred. Only if it is specifically incurred. Allocated का मतलब क्या है? पहले इनकर हो चुका है फॉर एन ओवरऑल बिजनेस. अब तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे अंदर डाल रहे. आप 5 लोग जब खाना खाने जाते हो दोस्त, आप 3-4 आइटम मंगाते हो. एक दोस्त होगा, अभी फर्ज मानिए, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको. फर्ज मानिए 5 दोस्त खाना खाने गए. 2 मेन कोर्स मंगाया, 2 स्टार्टर मंगाया, 2 कोल्ड ड्रिंक मंगाया और एक पानी का बोतल मंगाया. एक दोस्त ऐसा है जिसने कोल्ड ड्रिंक छुआ नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं है, उसे पसंद नहीं है, तो वो पानी पी गया. लेकिन जब बिल देने का वक्त आएगा तब वो ऐसे बोलेगा क्या? अरे यार, तूने कोल्ड ड्रिंक पिया तो मैं उसके पैसे क्यों दूं? बोलते होंगे कोई कोई लोग. ऐसे लोग दोस्त बनने के काबिल नहीं होते.
दोस्ती मिल बांट के खाने में होती। तो वो बेचारा दोस्त क्या बोलते हैं, चलना है यार, छोड़ना, कोई बात नहीं होती, वो आपके खाने में कंट्रीब्यूशन दे देता है। उसके पल्ले में क्या पड़ा, कोल्ड ड्रिंक का खर्चा पड़ा, लेकिन क्या उसने कोल्ड ड्रिंक पी थी? नहीं पी थी। ये हो गया उसका एलोकेशन। ये क्या हो गया? एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब क्या, तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली वो कोल्ड ड्रिंक आई थी क्या? नहीं, तुम्हारे पल्ले में वो पड़ गई, चल ठीक है, दोस्तों के साथ गए थे, ना नहीं बोल सकते, ना नहीं बोल सकते। कहने का मतलब ये, समझने का मतलब ये कि एलोकेटेड स्पेसिफिकली आपके लिए इनकर नहीं हुआ है, इनकर हुआ है बस आपके सिर पे लाके लाद दिया गया है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। इट विल बी नॉट अलाउड ओवर हियर, it will be not applicable, not allowed over. What is the reason? It is not specifically incurred, but they are apportioned to this asset. It will be capitalized only if it is specifically incurred. ये बोलने में मेरे से पहले गलती हुई थी, उस गलती को अब मैं सुधार रहा हूँ। Kindly excuse me for that. Next, architects and consultant fees directly related to the construction. Architect fees. Architect fees क्या है? They are a directly attributable cost, into bracket लिखना professional fees. कितना है आर्किटेक्ट का इधर? आर्किटेक्ट इज 400,000, मतलब 4 लाख। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑन द आइटम ऑफ डिस्कशन इज कॉस्ट ऑफ एलोकेटिंग रिलोकेटिंग स्टाफ, कॉस्ट रिलेटेड टू फॉर्मल ओपनिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन एंड इनॉग्यूरेशन are not considered as directly attributable cost, and hence they are not capitalized. This is over. Next one. Interest paid on loan for factory construction. Interest on loan. In the reasoning, it is capitalized as per AS 16. What is the calculation? 120 लाख का लोन लिया आपने, मतलब 1,20,00,000। उसके ऊपर ब्याज दर कितना था आपके लोन का? ब्याज दर है 10% पर एनम, और आपको इसको 8 महीनों के लिए कैपिटलाइज करना है। सो वी आर लुकिंग एट 1,20,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 12। आपका आंसर आएगा 6,40,000। कितना आएगा आपका आंसर? सॉरी 10%. हाँ, सो 1,20,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, 8 लाख। सॉरी, व्हाट इज द आंसर? 8 लाख। 8 लाख है ना, सॉरी 640 कैसे है पता नहीं, कैलकुलेटर में वायरस है। 8 लाख। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर यूज इन द फैक्ट्री, पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा। प्लांट एंड मशीनरी परचेज, ये क्या होगा? परचेज प्राइस ऑफ एसेट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेज प्राइस ऑफ एसेट कितना है? 6,000 बोलता है। 6,000 मतलब कितना हो गया? 6,000 इंटू 1000, ये कितना हो गया बॉस? दिस इज 60 लैक्स, दिस इज 60 लैक्स। ठीक है, अब इसे यहाँ पे एक सेकंड क्लियर कर रहा हूँ। अब देखता हूँ कुछ अपना एडजस्टमेंट बचाएगा। ये एडजस्टमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गया, और लोन भी हो गया। वी हैव कवर्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स, वी हैव कवर्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स इन द क्वेश्चन। अब केवल टोटल लेना है, तो टोटल लीजिए 1 करोड़ प्लस 5 लाख प्लस 60 लाख प्लस 16 लाख प्लस 10 लाख प्लस 4 लाख प्लस 8 लाख प्लस 60 लाख। What is the answer? What is the answer? 263, 26 crore 30 lakhs. Just a second. 2 crore 63. Yeah, Yeah. correct. Over here, institute has made one separate thing. They are not showing this as land and machinery. So they are showing two different classes of assets. What are they showing? Institute is showing like this. So
This is two crore 3 lakhs. 2 crore 3 lakhs. This is cost capitalized for land and cost capitalized for machinery. They are showing separately. It's 60 lakhs. So A and B is shown over here separately. A and B is shown over here separately. That's your solution. You have to show it separately. You should ideally show it separately. Show it separately. We have written the particular, so we should show it together. No, we have not. We have rubbed off machinery from the particulars. Particulars से rub off कर दिया. देखिए ध्यान दीजिए. वो मैंने 60 लिखा था ना, मैंने हटा दिया और उसको फिर ये आप इसको रोमन न्यूमरल 1 कर दो, इसको रोमन न्यूमरल 2 कर दो. Not wrong, if we take 10,500, we just put amount. It will be wrong because they are separate line items given in the question. They're separately mentioned. They will cut your marks if you write it. No, I'm saying that instead of writing 10, like thousands, it's fine for 500. Yeah. Please write. You can write 10,500 and everything. That's absolutely fine. But on top of that, you will write amount in rupees in thousand. Just write that. Done? हो गया? Bhumi was done with it? Good. चलो. तो in the sheet अपना क्या क्या हो गया? Question 1 हो गया, question 2 हो गया. Question 3 is homework. Question 4 हो गया. Question 3 is homework. Question 4 हो गया. अभी just a second guys. Institute का एक मटेरियल है. Just a second. अब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13. ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं आज के लिए. देखना क्वेश्चंस क्या है, आपको क्या पूछता है, पूरा ऑफकोर्स डिस्कस करवा के ही मैं होमवर्क दे रहा हूँ. विद रेफरेंस टू AS10 क्लासिफाई द फॉलोइंग items in the heads: purchase price, directly attributable cost or not to be included in the cost of the capitalization, import duty and non-refundable taxes. ये कहाँ पे जाएगा? Purchase price, initial handling cost, directly attributable, initial operating losses not included. तो ये पूछ रहा आपको हेडिंग नंबर, ये हेडिंग नंबर 1, ये हेडिंग नंबर 2, ये हेडिंग नंबर 3. 4 cost incurred when an item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought. देखिए वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं. It is ready, it is capable of operating in the manner intended by management मतलब capitalization completed. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये not included आएगा, ये थर्ड हेड में चला जाएगा. ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट फर्स्ट हेड में जाता है परचेस प्राइस में. कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग इज नॉट इंक्लूडेड. Installation and assembly are directly attributable cost second head. Administrative and general overhead cost not included. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया. अभी देखिए एक बात, एक नोट आपको लिखा देता हूं. चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इट्स इजी घर पे आपको इसे सॉल्व करना है एक बार. अभी ना आपको एक नोट एक और लिखाता हूँ, मैं आपको एक और नोट लिखाता हूँ. लेट्स पे अटेंशन. Now the asset has reached the position which is necessary for its
ऑपरेशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, मतलब क्या मैनेजमेंट जैसे चाहती है उसे यूज करने का, उस स्थिति में वो आ चुका है। ऐसे टाइम पे क्या होगा, एनी कॉस्ट आफ्टर दिस पॉइंट is not capitalized, is not capital unless it meets capitalization criteria। ये इनटू ब्रैकेट नीचे लिखना, ये आगे के लेक्चर में डिस्कस हो, ठीक है। अप टू द पॉइंट that the asset is ready for its intended use by management, up to the point capitalize all costs that meet purchase price, directly attributable cost and decommissioning liability meaning. This is a good chart. It's a, देखो ऐसे क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चन को समझने के लिए छोटे छोटे चार्ट्स हम बनाते रहेंगे, लेकिन ये जो चार्ट्स है आपके, ये जब आप रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन, नोटबुक को फट 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 ऊपर से देखेंगे, ये पूरे चैप्टर को दिमाग में घुसा देगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट इंश्योर कि आपके नोटबुक में होना चाहिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। All right, guys, this done. Yes. Last question of the day. क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इजी क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें।
Cost of the plant as per supplier's invoice plus taxes, capitalized. Initial delivery, capitalized. Cost of site preparation, capitalized. Consultant, capitalized. Interest charges paid for deferred credit not to be capitalized. Estimated dismantling cost paid after 7 years. Assume this to be present value, capitalized. Operating losses are not capitalized. That's it. Question over. So what is all is capitalized? 25 लाख प्लस 2 लाख 27, 27 और 6 33, 7 40 और ये 43। अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी किया ना हम लोग ने, ये क्वेश्चन तो अभी किया 43 लैक्स वाला। चलो तो ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन एक तरीके से कवर हो गया अपना। ओके, सो दीज क्वेश्चंस आर डन फॉर टुडे एंड वी हैव फिनिश्ड यस्टरडे का जो चालू किया हुआ था टॉपिक वो अपना खत्म हो गया। अभी कल के लेक्चर का एजेंडा अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये section का सॉरी ठीक है।